Academic Affairs, Dr. Anjani Singh Tomar, Faculty Convener, Dr. Girish R, faculties, and our teams participating in the GIMC from all over the country and the world. The GNLU International Moot Court Competition was launched in 2009 with the objective of creating a platform for testing the legal acumen and potential of law students globally. Today, after 14 years, it is with immense pride that we welcome you all to the inaugural ceremony of the 14th edition of the GNLU International Moot Court Competition. To begin with the inaugural ceremony, may I now request Professor Dr. S. Shantakumar to escort Shri Om Birla, Honorable Speaker of the Lok Sabha, and Shri Rishikesh Ganesh Bhai Patel, Honorable Minister of Law and Justice, to the stage for the lighting of the auspicious lamp. Madam, please. Thank you, sir. May I now request Director Professor Dr. S. Shantakumar to felicitate Shri Om Birla, Honorable Speaker of the Lok Sabha. Photographer. Thank you, sir. So may I now request you to felicitate Shri Rishikesh Ganesh Bhai Patel, Honorable Minister of Law and Justice. Thank you, sir. May I now request Professor Dr. S. Shantakumar to deliver the welcome address. Very distinguished Chief Guest for this inaugural session of the 14th GNLU International Moot Court Competition, Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji. Our very own Honorable Minister for Law, Government of Gujarat, and a member of our General Council of Gujarat National Law University, Honorable Shri Rishikesh Bhai Patel ji. My colleagues on the dais, Dr. Jagdish Chandra, Registrar, Dr. Anjani Singh Tomar, Head Academic Affairs, very distinguished officers from the Lok Sabha, distinguished faculty colleagues, all the wonderful participants who have come from different parts of the country and from different countries of the world, all the wonderful student volunteers of Gujarat National University who have made it possible to happen. On behalf of Gujarat National University, I extend a very hearty welcome to each one of you who have assembled here to witness the inauguration of this 14th GNLU International Moot Court Competition by our Honorable Chief Guest, distinguished Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji.
It's a great day for us. It's a historic day for us that we have with us the guardian of the parliamentary democracy, the Speaker of Lok Sabha, sitting amidst us to not only to inaugurate the Moot competition, but also to bless this university to reach to greater heights. So on behalf of Gujarat National University, I extend my heartiest thanks to you, sir, for kindly consenting to be with us today. Again, it's a very, very important day for us in the history of GNLU that we are having the Honorable Minister of Law, Government of Gujarat, Shri Rishikesh Patel, with us today. He is a member of the General Council and this is his first visit to Gujarat National University. Therefore, it becomes our duty to welcome you, sir. And we would want to see you more often and to help us and guide us in building this institution and take this institution to greater heights. I must place before you, sir, this culture of mooting amongst the students of GNLU. By now, it has got into their DNA. They argue for everything. Not only in the moot court competitions, but in every class, every minute. So this skill of taking up issues and arguing has really helped this country. Unfortunately, sir, one very important development which has happened in this country was not reported anywhere in the newspaper. Obviously, I would feel that it should have hit the headlines of all the newspapers in the entire country. When in 2021, sir, May 2021, when the Government of India imposed a digital service tax on entities which are not having their offices in India, especially e-commerce industries. The US government, especially this tax was imposed on Google by the Government of India. And immediately the US imposed a retaliatory measure affecting the e-commerce companies in India. This issue, our students through their initiative called the Birla, our faculty colleague who guided this project is also present here. So our student members, they wrote to the US Trade Commissioner giving him 10 points that why this decision of the US government is illegal. It's wrong. The US Trade Commissioner, the US Trade Representative, he took this issue seriously and he invited our students for a hearing. He said, your arguments are very nice. Let me listen to you. He said there was a virtual hearing and in that hearing the GNLU students team presented their research before the US Trade Commissioner and it's the greatest achievement, sir. The US Trade Commissioner was convinced with the arguments and he immediately withdrew that tax imposed on Indian. The retaliatory measures initiated against India was withdrawn. This is completely purely a students' initiative of GNLU. Of course, supported by our faculty members. Ms. Harsha is there, Mr. Soham Bajpai is there. They were involved in this project. They were leading this initiative. It was such a wonderful, not only India, sir, the retaliatory measures which was imposed by 5 other countries were also withdrawn along with the retaliatory measures imposed against India. So such is the contribution, sir, and we are already rated by the Gujarat State Institutional Ranking Framework as a 5-star university. And as for the National Institutional Framework published by the Ministry of Education, Government of India, we are the 5th top-ranking national law university in this country. So after Bangalore, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Gandhinagar is in the top list of the national universities. And with your presence, with your blessings, with your support, I am sure, sir, we will reach within the top 3 position in very short period of time.
And with these few words, I once again extend a very hearty welcome to each one of you who are present here today. Thank you so much for joining us today. Keep coming here and keep blessing our students and bless this institution so that we continue to grow and reach greater heights in the near future. Thank you so much. Thank you, sir, for those enlightening words. To give an insight into the workings of the GNLU International Moot Court Competition, may I now invite Faculty Convener Dr. Girish R to the stage. Respected Honorable Speaker Shri Birla, respected Honorable Law Minister, Government of Gujarat, respected Director Sir, respected Head Academic Affairs, respected Registrar, respected faculty colleagues, respected senior officials from Lok Sabha and Gujarat government, dear participants, dear organizing committee members and other GNLU students, it's indeed a great privilege for me to stand before you as the convener of the Moot Court Committee, which is organizing this particular GNLU International Moot Court Competition in its 14th edition. This Moot Court Competition started as a international Moot Court competition having elements of trade law adjudicated before ICJ was the initial concept which we had, which we started in the year 2009 with the issues of privacy as a dispute before ICJ. Subsequently, it emerged as a moot having international and elements of space law, sports law, etc. Based on the review and based on the opinions of participants as well as the judges, after 4 editions, we changed the competition purely into a WTO dispute resolution mechanism. So, from 5th edition onwards, this competition completely switched over to a trade law moot court competition. In the past editions, this moot had the presence of many countries across the world. We had the presence of teams from USA, Bangladesh, Mauritius, Singapore, Malaysia, Philippines, Nepal, Sri Lanka, Kenya, Nigeria, UK, Australia. Even we had judges coming across the globe judging this particular competition. This particular competition had many renowned partners, starting with WTO, then World Trade Institute, University of Bern, then Academy of European Public Law, University of Barcelona, then many law firms which are of international level as well as national level, and the Organization of Government of India, that is Indian Institute of Foreign Trade, having 2 agencies, Center for WTO Studies and Center for Trade and Investment Law, having partners along with leading law firms in trade law, Lakshmi Kumar and Sridharan, etc. So this particular competition tried to see that in India, the trade law, where we could give maximum importance to this subject, and initiative should be made to see that the law schools across the country as well as outside India consider this particular moot court competition as the greatest competition in tune with what is there in as ELSA WTO moot court competition. Now this moot also had participation of many leading personalities who are presently and in past also working with WTO as well as WTA, coming here and judging this particular competition. As a leading national law university, ensuring that the students are actively involving in moot court competition, we try to see that we participate in all the possible moot court competition and tries to make maximum achievements, whereby emerge as a leading university having highest achievements in moot court competitions. Along with this, we have an obligation to see that we organize many moot court competitions.
In the past, we organized Bar Council of India Moot Court competition and the National Human Rights Commission Moot Court competition. In the upcoming year, we are already have 4 Moot Court competition planned. One is National Human Rights Moot Court competition. Another is a competition on mediation. Third is a competition on securities and investment law. And fourth one will be this particular GMC. Having given such an importance to this particular Moot Court competitions, we see that the students across the country as well as students from outside India get an opportunity to visit Gujarat National Law University and use the facilities which are available here and the expanding facilities whereby our contribution should be there to expand the knowledge and expand the mooting skill. With this particular initiative, we try to see that the well facilitated provisions are provided, and as also to see that the participating students are getting a fair and competitive atmosphere to compete in these competitions. With these few words, I think that I sufficiently explained the role of Moot Court Committee in GNLU and the contribution of Moot Court Committee and GMC to the mooting work. As stated by Director Sir, we have great pleasure and we have the fortune to have the Honorable Speaker of the Lok Sabha itself here to inaugurate this particular competition. I think being a part and head of this particular Moot Court competition for 14 years, it is indeed immense pleasure and happiness for us to have such a great personality with us inaugurating this particular competition. And in the history of GMC, it's a really an important chapter for having the presence of Honorable Speaker of Lok Sabha before us. It's also indeed a great happiness for us, also privilege that our Law Minister itself present here in the inaugural function of the competition. This presence will make we motivated further as a student community as well as an organizing committee to see that these kind of competitions will be well useful for the future generation and the upcoming law students of various law universities. Our aim is not to see that these competitions are restricted only to the premier law schools, but also to see that it reaches to all the law schools across India, whether it is National Law University or private law universities. But it is to see that we have to reach out to the law colleges which are there in the remotest area, coming here and enjoying their law career or law studies, having such a opportunity to participate in this Moot Court competition. With that particular aim, in the past also we had been organized Human Rights Moot Court competition sponsored by National Human Rights Commission. We had a very good participation of 96 teams registering and 80 teams participating in this competition. So this being a trade law competition where since law technicalities more, the traditional law school students are hesitant to participate. But our job is to see that this also get transformed in the upcoming years. These few words, I conclude my introduction to GMC for the honorable guests and also for the honorable audience. Thank you. Thank you, sir. That was very informative. The importance of mooting in law schools can never be underestimated. And with that, may I now invite Dr. Anjani Singh Tomar, Head of Academic Affairs, to address the participants on the importance of mooting in law schools and the contribution of GIMC to the same. Honorable Chief Guest of the inauguration program today, and Honorable Speaker of Lok Sabha, Shri Birla ji, Honorable Minister, Government of Gujarat, Law and Justice, Shri Hrishikesh Bhai, Honorable Director, GNLU, Dr. S. Shanta Kumar, Convener of GIMC, Dr. Girish R, Registrar, GNLU, Dr. Jagdish Chandra, my admin and academic staff members from GNLU, participants across the nations, the GIMC team, student team,
and my dear students. It's indeed been a great pleasure and honor for me to stand before you and the Honorable Speaker of Lok Sabha as what our Director Sir has introduced, the premier institute of not only India but the world, which is making law, which is making this day as a perfect day for all of us to stand here. I'm standing here because our Lok Sabha is working so well, the democracy that the Lok Sabha is establishing, and that's why it makes me really proud law student today. And I think that as Dr. Girish was explaining, he has already done 50% of my work. What more I can explain you, that for GIMC we have the presence of Honorable Minister of Law and Justice, Government of Gujarat here in front of us, the Speaker of Lok Sabha of our esteemed country with us for the inauguration. I think this is what pays a very important aspect for all of us to understand that what moot court competitions are there for a law student. But indeed, since Sir has given me this responsibility, I'll definitely share my views with you. And what I see that these moot court competitions are like, as stated earlier, that it is something like oxygen for all of us. We know that our law students, we run these law schools in order that we can create good advocates and good judges. And how will we create it? Unless you will understand what are the intricacies of law cases. Law will not come, the cases will not come to you directly like explain this section or explain this case. It will come with intricacies. So moot court competitions are created in order that you really understand that the cases will come to you like that. Having so many intertwined questions of constitutionality, of civil laws, of criminal law, international law, trade law, and what not. Everything below the sky can come to you. So the very first thing which I see is that the law students inculcate the spirit of teamwork. Teamwork is very important for any lawyer, and of course when you will become judge, you will realize it more. Lawyers get a lot of support, judges may have to sit and think and discuss with their friends, their team members. And not only this, but when different type of problems come, like as Sir was discussing, Girish Sir was discussing, that related to trade laws, related to international law, related to income tax aspects will come, not across only in the municipal way, but also internationally. How you are going to do it, how you are going to face that problem is by making research. It's very important that an advocate should develop the skill of research. And I think moot court competitions are in addition to what we are doing in the law school programs. Along with that, I really see that when you people, young, energetic, enthusiastic minds, brilliant mind which God has created, when they put their things together up in the competitions like this, and when they participate, when they win all these competitions and put them in their CV, it helps the employers to select their prospective employees. I see GIMC has played a very important role in shaping up the careers, and the feedback that we got from the participants or the winners of the previous competitions, they've always informed us that it has actually helped them to develop their interest in a particular area of law. And that is what we are looking forward to. I hope and I wish that these days of this GIMC competition at GNLU should be the most memorable days of your life, of your time in the law program. And I welcome all of you. I also wish all of you all the best of bestest that is possible for me to give you, that you should participate fully, you should get the everything which is their encouragement and support, and I wish you all the luck, and I hope to see the winners very soon. Thank you very much. Thank you, ma'am. It is an immense privilege to have among us Shri Om Birla, Honorable Speaker of the Lok Sabha, as the chief guest of this inaugural ceremony. So may I now invite you to deliver the inaugural address.
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फोटोग्राफर के इस 14th सेशन इंटरनेशनल मूट कोर्ट के इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के लॉ मिनिस्टर, संसदीय मंत्री, चिकित्सा मंत्री माननीय ऋषि भाई पटेल जी, इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर एस शांता कुमार जी, रजिस्ट्रार डॉक्टर जगदीश चंद्र जी, एकेडमी हेड डॉक्टर अंजनी तोमर, फैकल्टी सेक्रेटरी डॉक्टर गिरीश जी और इस इंटरनेशनल लॉ कोर्ट के इस कंपटीशन में कई देशों से आए लॉ के विद्यार्थी, भारत से अलग अलग देशों से आए सभी विद्यार्थी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपने जीवन का करियर लॉ विद्यार्थी के रूप में शुरू किया। इस देश का इतिहास जो हम सबके लिए गौरवशाली इतिहास रहा, और दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भी उन देशों के अंदर चाहे आजादी का आंदोलन रहा हो क्या और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए हों, उसमें लॉ के पढ़े हुए विद्यार्थियों के जिन्होंने अपना करियर वहां से शुरू किया, उन्होंने समाज में एक व्यापक परिवर्तन की नेतृत्व किया। इस गुजरात की धरती से ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो कानूनी पेशे के रूप में गए थे, और उन्होंने वहां जो अफ्रीका में जो कुछ भी देखा, अनुभव किया, क्योंकि लॉ से अपना करियर शुरू करने के कारण एक बदलाव, एक परिवर्तन का विचार हमारे मन में हमेशा रहता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका के बाद फिर भारत के अंदर आजादी के आंदोलन की एक नई दिशा थी, क्योंकि आजादी का आंदोलन तो 1857 से चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस देश में उस समय के परिप्रेक्ष्य के अंदर सारे देश को एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा किया, और उनके इस आंदोलन को केवल भारत ने नहीं, दुनिया के कई देशों ने जो आजादी का आंदोलन लड़ा, तो उनकी प्रेरणा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल
जिन्होंने उस कठिन परिस्थितियों में आजादी के बाद सारी रियासतों को एक करने का काम किया। और आज ये भारत की विशालता, विविधता, विविध संस्कृति, हमारा विशाल संविधान, उन सब में कहीं न कहीं लो कैरियर से शुरू करने वाले उन नौजवान विद्यार्थियों ने नेतृत्व करने का काम किया। संविधान निर्माण से लेकर और उसके बाद देश के अंदर कानून बनाना, कानून बनाते समय जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून बने, उसके लिए कहीं न कहीं जितने भी हमारे आजादी के आंदोलन के प्रणेता रहे हों या आजादी के बाद देश के निर्माण में रहे हों, उसमें लोक कैरियर से शुरू करने वाले उस समय के विद्यार्थियों ने इस राष्ट्र हित के अंदर बड़ा व्यापक योगदान किया। और इसीलिए आप इस प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर अपना अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण कर रहे हैं। LLB के बाद LLM की PhD यहां से कर रहे हैं। और जब मेरी कई बार लॉ के बड़े वकीलों से, जुडिशरी अफसरों से जब चर्चा होती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई जज कहते हैं कि नया जो लॉ का विद्यार्थी आ रहा है उसका टैलेंट बहुत अद्भुत है। उसकी क्षमता, उसको समझने समझाने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, उसका चिंतन, अध्ययन, एक समग्र दृष्टि का विद्यार्थी अब लॉ यूनिवर्सिटी से तैयार हो रहा है। और देश की जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं, आप देखेंगे कि किस तरीके का टैलेंट अभी हमारे इस विश्वविद्यालयों के कैंपस से निकल रहा है। अभी सही कहा है शांता कुमार जी ने कि ऐसी बहुत सारी डिबेट, चर्चा, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में भी भारत के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी तर्क, चिंतन, उनकी वाद विवाद और उनका अध्ययन उस विदेशी कानून जो बनाया उसमें भी तर्क के आधार पर उन्होंने उसमें संशोधन किया। ये भारत के विद्यार्थियों की ताकत है। और इसीलिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस राष्ट्र के ऊपर है। हमने आजादी के 75 साल के अंदर देश में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन किया। हमारे जो नए विद्यार्थी शिक्षण, अध्ययन, रिसर्च, इनोवेशन के माध्यम से एक अद्भुत क्षमता है। दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर भारत का विद्यार्थी नेतृत्व कर रहा है। और कई देशों के अंदर वहां पढ़ने वाला विद्यार्थी, भी मैं केन्या, तंजानिया गया था,
और केनिया तंजानिया में जो महाविश्वविद्यालय के अंदर जो भारत में पढ़कर गए विद्यार्थी, उनसे जो मेरी चर्चा हुई और जो उन्होंने अनुभव भारत के बताए, वे अपने आप में अद्भुत थे। उनका इतना अच्छा शिक्षण, अध्ययन, प्रशिक्षण और जीवन सीखने का सबसे बड़ा अगर हमारा अनुभव रहा तो भारत में रहा, कि अपने विद्यार्थी जीवन में कई सारी चीजें वहां पर सीखी। और जिस तरीके के भारत के लोगों ने, हमारे पास कई बार ऐसी परिस्थिति होती, पैसा खत्म हो जाता था, पैसा आने में देरी होती थी, तो मैं दुकानदार, चाय वाला, रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला मैं उधार दे देता था, का चलो पढ़ो। आप इतना विश्वास, भरोसा भारत के लोगों का है। ये जब अनुभव देश के, अन्य देशों के, भारत के पढ़ने वाले विद्यार्थियों से जो अनुभव प्राप्त होता है, तो मुझे लगता है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ हमारे संस्कार और हमारे नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता, जिसके कारण आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। और ये टैलेंट मेरे सामने है, मैं देख रहा हूं, क्योंकि लो विद्यार्थी और संसद का बड़ा निकट का संबंध है। भारत में संविधान बनाने से लेकर जितने भी कानूनों के अंदर, चाहे संविधान के अंदर बदलाव आया हो या देश के अंदर जितने भी कानून बने हों, वो भारत की संसद से बने। और उसके अंदर हमारे लो से पढ़ने वाला विद्यार्थी, जो कई अलग अलग क्षेत्र के अंदर, कोई सामाजिक क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, कई एक्सपर्ट के रूप में, कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट के रूप में, उसका कंट्रीब्यूशन एक बेहतर कानून बनाने के लिए रहा है। इसलिए राष्ट्र के इस निर्माण में आपका सबसे बड़ा योगदान है। और आजादी के 75 वर्ष बाद हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्या योगदान होना चाहिए, इस पर भी हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। और इसीलिए आपने मूट कोर्ट की, इंटरनेशनल मूट कोर्ट की आज प्रक्रिया शुरू की है, जो लगातार आप, ये 14 सेशन है आपका। इसी तरीके से मूट संसद होती है। जब मैं उस मूट संसद के अंदर उन नौजवानों के, देश के अलग अलग क्षेत्रों के नौजवानों की चर्चा, संवाद, डिबेट, उनका चिंतन, उनका सोच, भविष्य का विचार, जब मैं सुनता हूं संसद में, मुझे लगता है कि क्या टैलेंट है भारत का। हम केंद्रीय कक्ष के अंदर जब देश के अलग अलग राज्यों के विद्यार्थी उस कंपटीशन में जीत कर आते हैं, उनकी जब प्रतियोगिता कराते हैं, हमारे जितने भी आजादी के प्रणेता, आजादी के बाद भारत के निर्माण करने वाले महापुरुषों पर चर्चा कराते हैं, उनके जीवन के बारे में चर्चा कराते हैं, तो वो जिस तरीके के विचार उनके जीवन के उनके साथ वर्तमान प्रासंगिक तरीके से रूप से रखते हैं, मुझे लगता है कि एक अद्भुत क्षमता का नौजवान भारत का है। और इसी तरीके से आप भी इंटरनेशनल
मूट कोर्ट के माध्यम से जो आपका सेशन शुरू होगा, जिसे अलग डॉक्टरों के अंदर अलग अलग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कहते जिसे कर, और जो चर्चा होगी, जो तर्क होंगे, क्योंकि लॉ का दायरा बहुत बढ़ गया है। लो एक सीमित दायरे में किसी जमाने में होता था, आजकल इंटरनेशनल लॉ की हम समझना पड़ता है, हमें कॉर्पोरेट लॉ को समझना पड़ता है, टैक्स सिस्टम को समझना पड़ता है। लॉ के अंदर दायरा इतना बड़ा है कि हर सेक्टर के अंदर, जीवन का कोई भी सेक्टर हो, चाहे मानवाधिकार का सेक्टर हो, चाहे अंतिम व्यक्ति का न्याय दिलाने का प्रश्न हो, सामाजिक परिवर्तन का प्रश्न हो, आर्थिक जीवन के अंदर बदलाव के लिए टैक्स सिस्टम हो, पॉलिसीज हो, नीतियां हो, कार्यक्रम हो, हर में कहीं ना कहीं लॉ का इनपुट बिना आप कानून नहीं बना सकते। आपको कोई भी योजना बनानी होगी, नीतियां बनानी होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं लॉ का आपको अध्ययन करना आवश्यक है। और इसीलिए आपके इस मूट कोर्ट के अंदर जो डिबेट होगी, चर्चा होगी, इंटरनेशनल स्तर के कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे, नेशनल कानूनों के बारे में चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपके इस मूट कोर्ट के माध्यम से जब आप अपनी लॉ की पूरी परीक्षा करने के बाद जब जाएंगे, तो एक अनुभवी वकील के रूप में आप जाएंगे। आपका पेशा इस देश में प्रतिष्ठित पेशे के रूप में, हम कहते हैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जिनकी प्रतिष्ठा भारत के अंदर है, और इसीलिए आपका उतना ही योगदान समाज के कंट्रीब्यूशन में भी होना चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने जीवन के अंदर, आज का विषय आपने मानवाधिकार का विषय रखा है, इससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक का न्याय दिलाना, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय दिलाने में आप उसके सहयोगी बने। इसलिए जब पढ़ते समय भी, पढ़ने के बाद भी देश में जहां भी आपको लगता है कि अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, व्यक्ति रूप से भी, सामूहिक रूप से भी, सोसाइटी रूप में भी, तो पढ़ते समय ही आपका कहीं ना कहीं समाज के लिए कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और उसमें आपका क्या योगदान, अपने जीवन के 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को न्याय दिलाना, सम्मान दिलाना, संविधान की रक्षा करना, संविधान के दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों को निभाते हुए हम उसके साथ जस्टिस कर सकें। भारत में आज कानून का शासन है, हमारी डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जितनी भी देश की जेलें हैं, उन जेल में जाकर भी अध्ययन करना चाहिए कि किस तरीके के केसेज हैं, कब से पेंडिंग है। कई बार आपको लगेगा कि इसके पास धन नहीं है, वकील नहीं है, लीगल एड की बहुत सारी
व्यवस्था होने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं है, आप उसके सहयोगी बनेंगे। और कानून में एक ही जीवन में ध्यान रखना चाहिए, हमारी कोशिश होना चाहिए जिसने कोई अपराध न करा उसको कभी सजा न मिले, उसको न्याय मिले। जिसने जितना अपराध किया उसको सजा मिले, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया ऐसा एक भी व्यक्ति अगर पीड़ित है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय है, विशेष रूप से लोक के विद्यार्थियों के लिए। निर्दोष व्यक्ति न्याय के अभाव के अंदर नहीं रहे, ये जब इस लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस बात का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से हम जिस मानव अधिकार की बात कर रहे हैं उसमें न्याय दिलाने का बहुत बड़ा पुनीत कार्य करेंगे। दूसरा मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी विधायी संस्थाएं, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, चाहे राज्य की विधानसभा हो, उसमें कानून बनाते समय चर्चा संवाद के अंदर आपका भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। कानून बनाते समय, कानून के बाद डिपार्टमेंट में रूल्स बनाते समय, जब कभी पब्लिक डोमेन के अंदर किसी कानून का प्रारूप डाला जाता है तो हमारे लोग के विद्यार्थियों उसको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद हमें लगे कि ये संसद कानून बना रही है तो हमारे चुने सांसद को इनपुट देने की आवश्यकता हो तो इनपुट देना चाहिए, उसको विषय लिख के देना चाहिए, डिबेट करे, चर्चा करे, अच्छी चर्चा करे, संवाद करे, कानून बनाते समय उसकी सक्रिय भागीदारी बने। क्योंकि एक जनप्रतिनिधि के पास बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उसका कानून बनाना भी सबसे महत्वपूर्ण काम है, और उसमें अगर आपका कंट्रीब्यूशन होने लगा, सक्रिय आपका सहयोग होने लगा, तो इस लोकतंत्र में आपकी सबसे सक्रिय भागीदारी इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा आपका योगदान होगा। और इतना ही नहीं, कानून बनने के बाद जब रूल्स बनते हैं, जब डिपार्टमेंट रूल्स बनाता है और उस रूल्स बनाने को पब्लिक डोमेन में डालता है, तो भी हमारा उस समय उपयुक्त सुझाव सरकारों को रहना चाहिए और अंतिम दम तक लड़ाई लड़ना चाहिए। हमारे चाहे विधानसभा में तो विधानसभा के माननीय विधायकों को, संसद में और संसद सदस्यों को हमें इनपुट देना चाहिए, उनका सक्रिय सहयोग देना चाहिए। हम जितना सक्रिय सहयोग करेंगे उतना ही हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत बना पाएंगे, और जितनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी उतना ही लोगों को न्याय मिलेगा, उतना ही मानवाधिकार मिलेगा। इसलिए अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर अगर न्याय दिलाना है तो उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आवश्यक है, ये मेरा आपसे आग्रह है। मैं निश्चित रूप से आपको बधाई देता हूं कि आपका 14 सेशन जो यहां पर होगा, जिसमें इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ट्रेड के बारे में, अन्य विषयों के बारे में मूट कोड पर आपकी चर्चा होगी, उसके छोटे छोटे वीडियो बनाकर देश में डालना चाहिए कि आप किस तरीके से डिबेट करते हैं, जुडिशियल अफसर का क्या सोच था उस समय, एज एडवोकेट करने वाले वकील का क्या पैरवी थी, तो देश के आम जनता को भी विभिन्न लोगों की जानकारी मिलेगी, और कानून की जितनी जानकारी देश के आम आदमी को होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा, मजबूत होगा। केवल वोट डालना और किसी सरकार को चुनना इतना ही हमारा काम नहीं है देश के लिए। इस देश के अंदर अगर सक्रिय भागीदारी निभानी है
देश के लोकतंत्र को सशक्त करना है, मजबूत करना है, शासन में पारदर्शिता लानी है, कार्यपालिका में जवाबदेही लानी है, कानून का शासन और ईमानदार शासन लाना है। तो आप जैसे राष्ट्रभक्त लोगों की आवश्यकता है जो देश के नवनिर्माण में योगदान दे। उस समय के लोगों ने देश की आजादी और आजादी के बाद भारत के नवनिर्माण में योगदान दिया था। हम इस आजादी के 75 वर्ष के अंदर हमारा और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और जो सरकारें विचार कर रही है कि आने वाले समय में हमारे देश का बना हुआ कानून ही हम पर लागू हो, जितने भी पुराने कानून हो उनको रिफिल करने का काम कर रहे हैं। तो आजादी हमारी जिस दिन होगी, जिस दिन हमारे देश का कानून, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं बना हुआ कानून देश में लागू होगा। और जितने भी पुराने कानून हैं उन कानूनों की सरकार समीक्षा कर रही है, उसमें भी इनपुट दीजिए और आवश्यकता हो तो बताइए कि ये पुराने कानून जिनको नए बदलने की आवश्यकता है, ये आजादी के पहले के कानून और नए कानून को इस परिप्रेक्ष्य में बनना चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि संसद की प्राइड संस्था आपके साथ हमेशा खड़ी है और दोनों मिलकर हम ठीक से कानून बनाने में और सही कानून बनाने में अपना अपना योगदान दे पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your words of wisdom. We are also very happy to inform you about the presence of Shri Sunil Kumar Singh, Honorable Member of Parliament, Chhatra, Jharkhand, among us. May I now request Professor Dr. S. Shanta Kumar to felicitate Shri Sunil Kumar Singh, Member of Parliament, Jharkhand. Thank you, sir. May I now request Dr. Jagdish Chandra, Registrar, Gujarat National University, to deliver the present vote of thanks. Shri Om Birla, Honorable Speaker Lok Sabha, Shri Rishikesh Ganesh Bhai Patel, Honorable Minister of Law and Justice, Government of Gujarat, Professor Shanta Kumar, Honorable Director, Gujarat National University, Dr. Anjani Singh Tomar, Head Academic Affairs, Dr. R. Girish, Faculty Convener, Moot Court Committee and GIMC, participants from India and abroad, invited guests, faculty colleagues, administrative staff members, organizing committee members of GIMC, press and media. It is my honor and privilege to propose vote of thanks on this auspicious occasion of inauguration of 14th edition of GNLU International Moot Court Competition 2023. First and foremost, on behalf of Gujarat National University, I profusely thank our esteemed chief guest for this event, Shri Om Birla, Honorable Speaker, Lok Sabha, for accepting our invitation and gracing this occasion with his presence and delivering inaugural address. Sir, thank you so much for enlightening all the students of law. So I hope all of them will keep in mind in contributing for building this nation. Thank you so much, sir. Thank you very much. My sincere gratitude to our distinguished chief guest, Shri Rishikesh Ganesh Bhai Patel, Honorable Minister of Law and Justice, Government of Gujarat, for having spared his valuable time to join for this event despite of his busy schedule. Sir, thank you so much for gracing this occasion. Thank you so much.
express my sincere thanks to our Honorable Director for his constant guidance, active involvement in every event of the Gujarat National University and encouragement. So thank you so much. My sincere gratitude to Dr. Anjani Singh Tomar, Head Academic Affairs, for the support extended to faculty colleagues in every endeavor. Thank you so much, madam. Thank you very much. My heartfelt thanks to Dr. R. Girish, Faculty Convener of Moot Court Committee, for successfully organizing 13th editions in past and making this 14th edition very, very grand success in organization. So I would like to extend my sincere thanks to Secretaries of Lok Sabha, special mention to Shri Rajiv Shukla, Shri Rajiv Datta, Shri N.C. Gupta, Shri Rajkumar sir and Shri Jha sir for extending all possible support for making this possible. So thank you each one of you. Thank you each one of you, sir. Thank you so much. So my heartfelt gratitude to Student Convener of Moot Court Committee and GIMC for organizing this, such a grand event of opening ceremony of 14th edition of Gujarat International Moot Court Competition. Thank you each one of you. So I also would like to extend my sincere thanks to all the participants who travelled from India and abroad and making this 14th edition of GMC very, very grand success. So once again I would like to welcome and also extend my sincere thanks to each one of you. Thank you very much. Once again, thank you each one of you, and press and media special mention for covering. So thank you so much each one of you once again. Thank you so much. Thank you, sir. With this, we have come to the closure of this inaugural ceremony. I would request the participants to please be seated for the orientation about the rules for the oral pleadings as well as the scoring. Thank you.